as we saw in the last lecture, that we use the technique of changing the xy variable into r theta variables, but that depends on the this function actually. If this function is symmetrical in x and y, then usually changing into polar coordinates work, right? But sometimes if this function is not a symmetrical function, right, then changing into polar coordinates may not work, right? In that case, you have to use this new technique, change of variables. And what is that actually? The original variables are x and y, and then we hypothetically search two new variables, u and v, suppose, right? uh, such that x is a function of u and v. You see this box here, x is a function of u and v. This is phi 1 actually. Phi 1 is some function. X is a function of u and v, and y is function of u and v. Or you can say that x and y are functions of u and v, right? Okay. And then this is a kind of a relationship we assume in order to switch from xy plane to uv plane. What I mean that, I will be taking this double integral problem from the xy universe to the uv universe. But in order to do that switch, I have to use a substitution, and this is a substitution which will work. And sometimes this is given in problem itself, and sometimes you have to think of such substitution, right? So if you use this substitution, and suppose this substitution is useful in order to evaluate this double integral, right? And as I told you yesterday, that whenever you change the universe of a problem relating to double integral, by universe I mean you are going to the universe of uv plane from the universe of xy plane, right? You are leaving your original plane, xy plane, and you are moving onto uv plane. Then this change of plane actually comes with some adjustment factor, right? And that adjustment factor is the Jacobian determinant. And you all know how to evaluate the Jacobian determinant, but this time the Jacobian determinant will be the Jacobian of variable x, y, which were the original variables, with respect to the variables uv, which are now the new hypothetical variables, right? And you all know how to evaluate this 2 × 2 determinant. And it is important that this determinant should not be equal to 0, because as you have studied in Jacobian topic, that whenever this Jacobian determinant is 0, then these x and y are functionally dependent on the variables u and v. It means that such kind of substitution is not going to work actually. So the important point is that this Jacobian should not be equal to 0, right? If it is 0, then this substitution will not work. You are not going to evaluate this integral by using this substitution. This substitution is just a waste, right? So please note that this Jacobian determinant should not be equal to 0. So if it is not equal to 0, then we can hope that this substitution may work, right? And you know that this Jacobian determinant is nothing but it is actually the ratio of the elementary area in the original xy plane and the elementary area in the new uv plane, right? So Jacobian represents the ratio of change in area if you are dealing in 2 dimensions. This is in double integral. So when we will deal with triple integral in 3-dimensional space, in that case, this Jacobian determinant will represent the ratio of change in volume, right? But at the moment, this represents the ratio of change in area, because we are just dealing with a double integral, right? Okay. So dx dy is equal to Jacobian determinant multiplied with du dv. Okay, that's fine. Now with these substitution, I mean x is equal to this much and y is equal to this much, and dx dy is replaced by this much. I will just plug these uh, two substitutions here in my original integral. This is my original integral, and you can see that this is the region R1. I have used the nomenclature R1 for the original region in xy plane, right? Okay, but now you see the changed version of this double integral. This is the changed version, but this integral was meant to be evaluated on xy plane, but now this new integral is evaluated on uv plane, because you have shifted uh, from xy plane to uv plane. Okay, now see this. This is capital F x y. This becomes capital F
and in place of x you write phi 1 uv, and in place of y you write phi 2 u comma v, right? Okay, and in place of dx dy you write Jacobian determinant du dv. So in fact we have used these substitutions here. And in place of R1, you should write R2 actually, because R2 is the region which is in UV plane, and generally the shape of the region changes. I mean to say that if R1 is a rectangle in XY plane, then it is possible that R2 is a triangle in UV plane. I mean, it is not necessary that the shape of the region becomes intact as it was in the case of change of variable from xy to r theta plane. I will show you that. We did few problems yesterday, and we observed that whatever was the region in xy plane, the shape of the region was same in r theta plane, right? The shape of the region doesn't change when you shift from xy plane to r theta plane, but it changes when you shift from xy plane to some hypothetical uv plane, what we are doing today actually, right? So that's why I have used a different nomenclature R2, right? To show that this R2 may be different from this R1. It may be completely different, right? Okay, so after this, this is question number 1. You can see that this is a double integral and the region is capital R, right? And R is the region bounded by R is the region bounded by, this is x is equal to 0, that is y axis, y equal to 0 is x axis, and x minus y equal to 1 is line, x plus y equal to 1 is also line, right? So you have to evaluate this integral, this one, in xy plane, and there will be a region R bounded by these 4 lines. Actually we will draw that, right? And we will first check that why it is required to evaluate this integral by using this change of variable technique, right? uh, I will ask a few questions to all of you, that is it possible to integrate this function with respect to x first? Please tell me the answer. Sonu, if you are there, please answer this. Is it Yes. possible to integrate is it possible to No, integrate sir. this function with respect to x? No. Now my second question, is it possible to integrate this function with respect to y first? No, sir. No. Okay. Now my third question, which is it possible to integrate this function if I convert this problem, if I take this problem from xy plane to r theta plane, which we did yesterday actually, is it possible that, is there some hope that you can evaluate this integral by changing into polar coordinate? No, sir. This is a, why you said no? How you concluded this, that सब्स्टिट्यूशन ऑफ u और v करना पड़ेगा sir. हाँ ऑफ कोर्स वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन लेकिन ऐसा क्यों है कि x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा रख के काम नहीं करेगा? क्या आपको लग रहा है कि x को अगर आप r cos थीटा रखें, y को r sin थीटा रखें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो कुछ ये आसान बन जाएगा या कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा हो जाएगा ये इंटीग्रेंड? आपको क्या सर लग रहा है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा. कॉम्प्लिकेट बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, cos के अंदर भी cos थीटा माइनस sin थीटा आ जाएगा, और इनफैक्ट दिस फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल इन x एंड y. अगर आप x और y को आपस में रिप्लेस करें, x की जगह y लिख दें, y की जगह x लिख दें, तो फंक्शन बदल रहा है, कुछ नहीं बदलेगा, नहीं शायद सेम आ जाएगा, सॉरी, cos अपने माइनस को एब्सॉर्ब कर जाएगा. बट उसके बावजूद भी भले ये फंक्शन सिमेट्रिकल है इन x एंड y, राइट, उसके बावजूद भी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इन r and theta is impossible actually by the usual techniques, right? सर And अगर स्क्वायर होता तो x स्क्वायर माइनस हाँ, y स्क्वायर. तो भी फिर cos के अंदर cos स्क्वायर cos 2 थीटा आ जाता, cos 2 थीटा, नीचे तो 1 हो जाता, लेकिन cos 2 थीटा हो जाता, वो भी कोई मुझे नहीं लगता कि आपने किया होगा, cos के अंदर भी cos मुश्किल होता ना. यस सर. हाँ, तो फिर सारी टेक्निक फेल हो गई हैं, तो फिर फाइनली आपको ये वाली टेक्निक लगानी चाहिए. और वैसे भी इसमें तो खैर गिवन भी है इस क्वेश्चन में, मान लीजिए गिवन ना भी होता तो भी हम यही करते हैं, इसको u मान लेते, इसको v मान लेते हैं, ऐसा किया जाता है, राइट? आगे के क्वेश्चन में शायद आप देखेंगे, राइट? तो इस क्वेश्चन को मैं 3 फेजेस में करूंगा. पहला फेज में वो करूंगा, मैं इस पिक्चर को ड्रॉ करूंगा एक्स वाई प्लेन में, राइट? सेकंड फेज, हाँ जी बोलिए सर. ये आपने लिखा ना j इज इक्वल टू dx dy अपॉन du dv. हाँ जी, ये वाला, या नहीं, नीचे वाला सर, ये d ये वाला, हाँ सर, इसमें हाँ d कहाँ से आया सर?
dx dy? नहीं, ये डी अलग से होता है, मतलब ये यहाँ से नहीं आया ऊपर से, ये थ्योरी में है। जैकोबियन डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है, ये असल में ये लाइन आपको इस पे ज्यादा फोकस करिए कि जैकोबियन का मतलब क्या होता है। जैकोबियन एक तरह से डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? जैकोबियन डिटर्मिनेंट जो होता है वो डेरिवेटिव, जैकोबियन मैट्रिक्स भी डेरिवेटिव होती है, और जैकोबियन डिटर्मिनेंट आपको ये बता देता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन्वर्टिबल है या नहीं है, राइट। तो डेरिवेटिव जब आप करते हैं, क्योंकि आज आप वन वेरिएबल का फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, आज आप फंक्शन पढ़ रहे हैं टू वेरिएबल का फंक्शन जिसके दो इनपुट हैं और दो आउटपुट है। इनपुट है एक्स और वाई, आउटपुट है यू और वी। तो डेरिवेटिव इस सेंस में। अच्छा आप ये बताइए कि जब वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, हाँ या ना? ये होता है डेरिवेटिव yes sir, dy by dx, हाँ। when y is a function of x। तो अगर u and v are functions of x and y, और बल्कि यहाँ तो उल्टा है, x and y are functions of u and v, आप देख पा रहे हैं ऊपर से x and y are functions of u and v, दिख रहा है आपको, राइट। yes then the derivative will be dx dy upon du dv, राइट। ऐसा आप समझ सकते हैं। इस केस में y is a function of x, राइट। इस केस में both x and y both are functions of u and v, राइट। तो ऐसे जनरलाइज किया जाता है चीजों को। डेरिवेटिव का भी होता है, जैकोबियन इज नथिंग बट इट्स अ डेरिवेटिव, राइट। और डेरिवेटिव का मतलब रेशियो ही होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट। dy अपॉन व्हाट इज dy? dy इज चेंज इन y, dx इज चेंज इन x। उनका रेशियो ही तो डेरिवेटिव है। तो इसीलिए जैकोबियन को भी एक तरीके से रेशियो से कहा जाता है कि जैकोबियन भी रेशियो होना चाहिए, चेंज इन dx dy, चेंज इन du dv, चेंज कहिए या एलिमेंट्री एरिया कहिए, है ना। ठीक है सर। तो आगे बढ़ ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आई विल ड्रॉ द रीजन, ओरिजिनल रीजन आर, ड्रॉ रीजन आर, राइट। और आर रीजन ड्रॉ करना बड़ा आसान है। चार जो लाइंस हैं आपको ड्रॉ करनी है, राइट। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो दिस इज माय y axis, right? This is x axis, right? So this line is actually y equal to 0. This is x equal to 0, right? So I have drawn two lines, right? And sorry, this is not two, x minus y ये तो है ही नहीं, ये तीन ही है बाउंड्रीज इसमें। It's only x plus y equal to 1. That's it. ठीक, x plus y equal to 1 is the third line. Only three lines are there, right? So x plus y equal to 1 is a straight line joining the points 1 0 and 0 1. So let's see that this is a straight line, right? Okay, so I will write the equation of this line. X plus y equal to 1, and this is the region capital R we are interested in actually. But unfortunately we are not able to integrate this function in this xy plane. This is xy plane. I will write that because this is the original region we are given, but unfortunately this is not going to work. Why it's not going to work? Because this function is not easy to integrate either with respect to x or with respect to y first, right? So we have to use a change of variables, and in fact that is given in question. The question is asking you to use these substitutions, right? Now the second part of this question, we will do this question in phases, and that is calculation of Jacobian determinant, because whenever you use a transformation, you have to use that balancing factor that is called Jacobian determinant, right? And yes, can you see that these are the equations of u and v with in terms of x and y, right? Uh, but in fact, you need that this Jacobian is actually the Jacobian of xy with respect to uv, right? So since you need this Jacobian of xy with respect to variables uv. In fact, you need this, but unfortunately, x and y are not given in terms of u and v. In fact, the cases of opposite. u and v are given in terms of x and y. तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भी चालाकी से मैं ये करता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन del uv del x y, right?
right? And what is this? This is the Jacobian of UV with respect to x and y, right? So I will write del u by del x, del u by del y, and del v by del y, right? So now I will find these partial derivatives, right? So del u by del x, if you differentiate this with respect to x, then what will be del u by del x? That will be 1. Del u by del y, differentiate this with respect to y. Del u by del y will be -1, right? Del v by del x, 1, and del v by del y is also 1. So if you find this, you will be getting 1, 1 minus, that's 2, yeah, 2, right? And an important point, please note that I will show here, I will write it here, this mod j is taken, this determinant of j is taken positive. Actually, this is very important, I forgot to mention it here. It's positive, a positive quantity, right? So if this number is negative, then you are going to avoid that negative sign, right? So hopefully or luckily we can say that this is positive, so I need not take the modulus of this number. So luckily this is positive. Sometimes it may be negative, then just take positive sign. So that's why this is very important, a positive quantity, right? Because in the last topic you have seen that this determinant Jacobian came out to be little r, and little r is always positive, the radial vector, right? Okay, now the third phase of this problem. Third phase is about the transformation, actually, right? You can see that the transformation R, or you should focus on the boundaries of this region R. Please tell me the boundaries of this original region. How many boundaries is it having? The original region. सर दो बाउंड्री है. So दो है? 3. 3 है. ट्राइंगल कितने के अंदर होता है? 3 के अंदर है ना ट्राइंगल. पॉइंट या फिर बाउंड्री? बाउंड्रीज एजेस कितनी है ट्राइंगल में? 3 होती है. 3 होती है ना. ठीक है, तो मैं इसका नाम आर डैश कर दूं. आर डैश नया रीजन बनने वाला है, राइट? वो अभी हम करेंगे काम को. इनफैक्ट ये सारे टाइटल्स हैं, ये सारे टाइटल्स हैं आपके, राइट? दिस इज द ड्रॉ रीजन आर, फर्स्ट फेज, then this is the second phase, and now we are into the third phase of this problem, drawing the transformed region R. But in order to draw that region, we have to actually check the mapping to which these boundaries are mapped, right? ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो 3 बाउंड्रीज हैं आपने कहा, फर्स्ट स्टेप, second, and this is for the third boundary, right? So I'm picking the first boundary, that is x is equal to 0, right? So x is equal to 0, which was the original boundary, right? Maps to, please pay attention, this is very important, and in this case you have to use these transformation. Actually what I'm going to do now, I am shifting from xy plane onto uv plane, right? And in order to do that, I have to rely on these equations, actually. So please Gaurav Kumar, where are you? Yes, sir. Gaurav, Yes, sir. please Yes. put x is equal to 0 here in both of these equations. What will you get? Sir, y is equal to -u and v is equal to u is y is equal to v. U is equal to minus v, u is equal to minus y. Y is equal to -2, And sir. Y is equal okay, to v equal, fine. But please note that you are going to take this problem from xy plane to, कौन से plane में ले जा रहे हैं प्रॉब्लम को? uv plane, sir. तो uv plane में xy होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, sir. नहीं, तो इन दोनों से कुछ ऐसा काम करो कि ये y हट जाए. Yes, sir. Sir, y u plus v is equal to 0, sir. u plus v या u is equal to minus v, कुछ भी कह सकते हैं, या y equal to minus u, बहुत तरीके हैं कहने के, ठीक है? तो ये आपको पता है किस चीज की इक्वेशन आएगी? यूवी प्लेन में किस, सॉरी y लिख दिया मैंने गलती से, v होना चाहिए था. ये यूवी प्लेन में किसकी इक्वेशन है? लाइन की. Yes, sir. लाइन का है, सर. कौन सी लाइन? जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है कि 135 डिग्री का? सर कौन? सर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाइन गुजर रहा होगा, सर. मतलब लगभग 90 ठीक है, 90 135 डिग्री का, राइट.
ओके, नाउ द सेकंड एज आई हैव पिक्ड द सेकंड बाउंड्री। मैंने कहा था ना ओरिजिनल रीजन बनाना बहुत जरूरी है। जो ओरिजिनल रीजन जो आप बनाएंगे उसकी बाउंड्रीज आपको एक करके उठानी। नाउ आई एम पिकिंग द सेकंड बाउंड्री y इक्वल टू 0। नाउ पुट y इक्वल टू 0 हियर इन दिस So v ट्रांसफॉर्मेशन, क्या minus 2 is मिलेगा? equal to 0. यानी कि u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू x, and collectively you can eliminate x from them and you will get v is equal to u। यही कहा था आपने, right? Now Yes, pick sir. up the third boundary, तीसरी बाउंड्री उठाइए। So v x is equal to plus 1. ओके मैप्स टू x प्लस वाई इक्वल टू 1। आप इसका यूज करना करेंगे, ऑफ कोर्स इसका यूज करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज दिस x माइनस वाई। Yes, तो sir. x प्लस वाई इक्वल टू 1 gives you v equal to 1 in a single step, and of course this is not containing x or y, right? And these equations are important because these are the boundaries of your new region। नया वाला जो रीजन आ रहा है ना आपका, उसकी बाउंड्रीज हैं एक्चुअली में। चलिए ठीक है, दिस इज माय v एक्सिस, राइट, and this is my u axis। draw a straight line u axis, और ये जो बनाया है हमने, ये है आपका u v, this is v equal to u, right? This is v equal to minus u, right? And I have to draw the line v equal to 1। v equal to 1 भी एक लाइन आएगी, तो चलिए मान लीजिए वो ये लाइन होगी। This is v equal to 1, right? ये हालांकि isosceles triangle होना चाहिए था, but it is not looking like an isosceles triangle, so I will draw it separately, something like this। So this is the new picture। You can see that the original triangle was like this, and the new triangle is just like a rotated triangle, right? Of course it has longer edges than the earlier one, right? अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि what kind of strip you want to make here? कैसी स्ट्रिप आप बनाना चाहते हैं, बताइए कैसी स्ट्रिप बनाएं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल Yes। बनाए तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा सर। हाँ, क्योंकि फंक्शन जो है ना ये फंक्शन होने वाला है cos u अपॉन v। दिस विल बिकम cos u अपॉन v। आप इसका इंटीग्रेशन u की रिस्पेक्ट में कर पा रहे हैं आसानी से, v की रिस्पेक्ट में? टेल मी। सर u। u की रिस्पेक्ट, यानी इनर लिमिट्स किसकी होनी चाहिए? अंदर वाली लिमिट u की होनी चाहिए। और अगर अंदर वाली लिमिट आप u की चाहते हैं तो फिर आपको स्ट्रिप कैसी बनानी पड़ेगी, खुद सोचिए। यानी मोशन आपको v के डायरेक्शन में होना चाहिए, यही तो मतलब हुआ। अगर आप अंदर की लिमिट u की चाहते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ही बनानी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है भी नहीं आपके पास। ध्यान रखिएगा, स्ट्रिप बनाना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, सोची समझी साजिश आपको करनी पड़ेगी। कैसी स्ट्रिप बनानी है, फंक्शन देखना पड़ेगा। मैंने जान के हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई है। वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप बनाएंगे तो आपकी इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, सॉरी, राइट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाने से आप देख पा रहे हैं कि जो स्ट्रिप का जो बेस है, राइट, बेस है आपका u इज इक्वल टू माइनस वी के ऊपर। हेड है जो आपका स्ट्रिप का वो है u इज इक्वल टू वी के। हाँ बोलिए। ठीक है, तो चलिए मोशन, ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दें जरा आप, क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? ये तो 0 0 है शायद, 0 0। और ये जो लाइन थी ये कहाँ तक जाएगी? स्ट्रिप चालू होगी 0 0 से, 0 से, और जाएगी v इक्वल टू 1 तक, v equal to 1, and this point will be 1 comma 1। this point will be minus 1 comma 1। हालांकि कोऑर्डिनेट की कुछ खास जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बना देते हैं। Write the limits of u and v। limits of सबसे पहले मैं लिखूंगा u की limits। हाँ जी बताइए। सर गौरव ने बोला sin 1। अच्छा, आंसर बता दिया। साइन 1 तो नहीं आएगा शायद, थोड़ा, हाँ साइन 1 आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ नंबर भी तो आएगा उसके आगे, कुछ dx dy का ये हाफ भी तो है, ये छोड़ दिया। 1/2 साइन 1 आना चाहिए। जैकोबियन का यूज नहीं करा गौरव ने, लगता है। इससे थोड़ा भूल गए थे सर। कोई बात नहीं। अब आया आखिरी फेस इस क्वेश्चन का, डी फेस। डी फेस में होता है इवैल्यूएशन ऑफ आई, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल। ये फाइनल फेस है। 4 फेस पे इस क्वेश्चन को हमेशा करेंगे हम, राइट। आई, कैपिटल आई इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं कि जो कांस्टेंट लिमिट्स हैं वो v की ही आ पाएंगी, 0 to 1, और inner limits those will be of u, and now the function that will be cos u upon v, and first I have to write du and then dv since inner limits are of u. Now integrating this function with respect to u, that gives you sine u upon v,
and divided by 1 upon v, right? And now I will put limits here in place of u is equal to minus v to v, and then dv, and limits of v are 0 to 1. Oh, sorry, I forgot to write Jacobian determinant like Gaurav. This is Jacobian du dv, and I have to write half 1 by 2 here, 1 by 2, right? And then this 1 by 2 comes outside, right? And now I'm going to put u equal to minus v here, and that gives you v equal to 0 to 1 v, and I think sine 1 minus, and what will be that? Sine 1 minus sine minus 1, right? Okay, and dv, सर and हाँ जी, सर जो वहाँ पे cos u is equal to minus v to v है सर, उसमें इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे ना सर? कहाँ पे कह रहे हो इसमें? यस सर. कौन सी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? सर 2 into सर 0 से v करें सर. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अगर ये इवन फंक्शन है, हाँ लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते? इवन फंक्शन है ना, तो हाँ लगा सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल. तो ये आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दैट बिकम्स 2 sin 1, 2 times sin 1. Sin minus theta is what? Minus sin theta, right? Then this 2 into will be cancelled, and v runs from 0 to 1, and then v dv, right? So v dv is v square by 2, so 1 by 2. So eventually the answer will be sine 1 divided by 2. So this is the final answer, and this is how a change of variables is used in problems. I hope you got this.